The access to quality education in the remote areas of Pakistan has been nothing but a distant dream. The schools are generally in poor shape and the children are often deprived of the right to learn. Traveling miles to the school as a daily routine, Nusrat took her responsibility as a challenge. She was determined to change the life of these poor children, and the best way to do it was to equip them with quality education. उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये चीज़ आई कि या अल्लाह अगर लाहौर से उठा के मुझे इस पसमानदा इलाके में भेजा गया तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इन बच्चियों के लिए कुछ कर सकूं और इस स्कूल को मैं उतना ही एक मॉडल स्कूल बना दूं जिस तरह के लाहौर ग्रामर स्कूल हैं। When Nusrat was given the charge to run a school in the distant village of Kalyar Kallan, the dire and desperate situation of the area proved to be a catalyst in transforming her into an agent of change. यहीं की बच्चियां जो पहले ये डरती थी नहीं जी हमने मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ना, लेकिन अब मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटे आप हाँ जी बताएं मुझे कि क्या आप फील कर रही हैं, वो या आप क्या बनना पसंद करेंगी। जिसे साइंस का शौक़ है उसने बुक्स पढ़ी हैं तो वो कहती है मैम मैंने तो डॉक्टर बनना है। दूसरी बच्ची से पूछती हूँ उसको हिस्ट्री का शौक़ है, वो कहती है मैम अगर मुझे मौका मिला तो मैंने सारे कंट्रीज़ का विज़िट करना है और मैंने ना हिस्ट्री में मेरी बहुत इंटरेस्ट है। This wasn't going to be an easy task for her had the timely brace by the government of Punjab not been there. The Punjab School Libraries Project was carried out by the government of Punjab as part of its investment in the education sector, with a major financial assistance provided by the Federal Republic of Germany through KfW and the federal government of Pakistan. National education policy has recommended to make use of libraries as a tool of develop, understanding, cooperation and harmony among public in general and students in particular, that the library facilities are very rudimentary and poor provision of such facility will help implement his objective of all of the national education policy. जिस दिन लाइब्रेरी का फिर इफ्तिताह किया गया, बच्चियां अंदर आई हैं और उन्होंने फिर वो लाइब्रेरी से बुक्स जो उन्हें मिली थी उनसे इस्तिफादा हासिल किया। अब जो मैं चेंज उनमें देख रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं। छुट्टियों में भी वो बुक्स इशू करवाती हैं, जाके वो घरों में पढ़ती हैं। उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। पहले बस ये निसाब की बुक्स पढ़ के तो बोरियत सी होती थी, कोई इंटरटेनमेंट नहीं थी, ना इन्फॉर्मेशन थी इतनी। जब से लाइब्रेरी आई है तो बुक्स पढ़ के काफ़ी ममालिक कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है और काफ़ी इंटरटेनमेंट होते हैं हम, काफ़ी मज़ा आता है। The provision of the library sparkled a ray of hope for children like Sana. Having very poor economic condition and absolutely no support, her desire to seek knowledge was badly hampered. She did not have any resources to feed her hunger to learn. But now, by the courtesy of the Punjab School Libraries Project being implemented under the German Debt for Development Swap program, she has access to a variety of books besides the syllabus. मेरी बेटी रोज़ाना लेके आती है, एक दो दिन के बाद ले आती है किताब, खुद भी पढ़ती है और भाई को भी देती है, वो छोटा भी पढ़ता है। तो हम तो पढ़ा ही नहीं सकते थे। इनका शुक्रिया अदा करती हूँ जर्मनी वालों की हुकूमत का कि इन्होंने हमें किताबें दी हैं और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। The project aimed to provide better learning environment to the children and teachers of middle-level schools all over the Punjab by facilitating them with the state-of-art libraries and literary material. It actually enabled them to get knowledge on a variety of important topics and subjects and thus raised their standard to bring it at par with any urban elementary academic institution. To achieve the desired target,
the government of Punjab needed to construct libraries and provide books and cupboards to over 9,700 government schools in the Punjab. The government of the Punjab started the construction of 1,178 library rooms, most of which have been completed. More than 10,000 steel cupboards were also supplied to 5,202 government elementary schools. The books have been selected through a committee which was actually phased out in the project, framed out in the project, and that committee was broad-based in the notables, the educationalists, the academia people and the government officers were the members of that committee, and they selected the books on the need basis, you may say, on the science, on mathematics, on international affairs, and but the school level contact was included in these books. School education department has also so many reforms in the education sector, like missing facilities and textbooks, and we are hoping that with the help of the German government, library facilities shall be provided to all the schools in Punjab. In the first phase of the library books procurement, 283 titles of book were distributed, whereas in the second phase, 272 more book titles were issued. It's a wonderful contribution by the government of Germany. I think it's a great thing for Pakistan. I mean, you're having books sent into your libraries. You know, when I was in the schools today, the librarians just very happy that they're getting new and current books. You know, they were ecstatic about it, and you could see from the books we provided last year that they've been well used by the students. जब मैं स्कूल में अपॉइंट हुआ 2009 में, तो जब विज़िट किया लाइब्रेरी को, आते ही मुझे विज़िट करवाया गया, तो मैंने बुक्स वगैरह देखी और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिन किताबों को हम सोच भी नहीं थे सकते कि हमारे गांव में, इस गांव की सतह पर इतनी जो है बेहतरीन किताबें और इंटरनेशनल जो बुक्स हैं वो, उसके अलावा इस्लाम से रिलेटेड बुक्स हैं, साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में जो है ना तकरीबन कोशिश की गई है कि बुक्स जो हैं वो लाने की. Within a few years, the project was a success story as it made a sudden impact on the children of these distant villages. It provided them an opportunity to explore the world in a new way. इस लाइब्रेरी के आने से हमें बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई हैं, जिसके बारे में इल्म फल्कियात के बारे में, साइंस के बारे में, इस ज़मीन के बारे में. इनमें हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं किताबें, और जो हम चाहते हैं वो हम पढ़ सकते हैं. मैं गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ये किताबें जो हैं मेरे ख्याल के मुताबिक इस लेवल के बच्चों के लिए एक बहुत कीमती तोहफ़ा है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि बुक ख़रीदने की ताकत नहीं रखते. Despite the tremendous success of this project and the positive impact it has made, the men at the Punjab School Library Project believe their job's not yet done. This project has indeed been a worthy investment in the education sector and has just started paying the best interest. This distinctive project has opened new doors for the brighter future of the coming generations, and it will steadily lead them on the road to enlightenment. जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की
दर्द